Assalamu alaikum, good afternoon and July to the people of Ladakh and Kargil. It is underway, chase underway, we are back with the chase. First ball yielded a boundary. Here is Bell again, this time inside the line. Nicely worked away. It's 5 for the loss of no wicket, it's 5 for none. It's okay, it's fine, it's where it is. In fact, what I'm looking for, it's okay now. It's everything is in place. Mansoor, next one, plays it back to the bowler. Samir Bell is operating at the moment with the new ball. Is he gonna ring the bell again? It is Samir Bell. Well, he's very much own Bell. The next one inside the line again, worked away. There is a man behind square on onside. Will just be one, I think, more than a single, but need to bat through the innings if they are to finish somewhere around that mark of 276. It is perfect. What's going on? It's okay. It was going nice. Here is the next one. In the meantime, guided nicely, and behind a scare on the off, not for runs. It is a dot delivery. Will up to one. Go straight to the fielder Mansoor Dar on edge of the circle, not for runs. 276 is what they require and is what they're looking for. Shot for LBW and is turned down by umpire. You're watching Jiggy Sports Time, and this one is coming your way from Magam Sports Field. Overhead, cloudless overcast conditions, gentle breeze, drizzle is on, slight drizzle is on, or the light drizzle. It's drizzling at the moment, but umpires are happy to continue with the game. So is the match referee, who's observing everything, keenly observing from grandstand there. 276 is what they are looking for to meet Frondus Motors Narabal on 11th of May here at the Santa. 11th of May is going to be the final day, and for the first time Frondus Motors Narabal making it to the finals of the tournament. The two sons, the duo from family of Koyum Sab, are delighted today. They were pumped up, jubilation and joy in their camp as their side making it to the finals of the tournament. It's raining everywhere, but no rain here. Are we in for another quick spell? Here is the next one. Down the leg side, gonna be wide, big wide it is. Hyder Ali is in the middle and he's got Mudassir Dar. Hyder Ali and Mudassir Dar, the two openers, to make those 276. Not going to be easy. But need a partnership straight away to lay the foundation for the big chase. But through the overs, understand the game properly here, try to read it out of the hand. But look at the surface, what kind of a surface it is. Open at the bat face, middled, not for runs again. But you can't afford dots, too many dots. Won't do it for your side. You require at the rate of 14.21 and over. 5.1. An innings and 5.1 constitute a game. Then we can simply go for that DLS, Duckworth Lewis Stern method. That is a kind of calculator is used to calculate everything, then to find out the result out of a game. And if you remember Mansoor, in the semi-finals, DLS always going against one team across globe, that is RSA, the Republic of South Africa. It started from 1992 when it was Pakistan for the first time making it to the finals of World Cup. Then in 1999 again, it followed in 2015, even in 2007, 2019, even 20. It started for South Africa in 1991. It is more than 6 into the double figures, I think. They're chasing 276. We are in over number 2. It's 11. Yeah, exactly. Into the double figures. They are chasing 276 mm. Pouring in at the moment. Light drizzle is on at the moment. He's absolutely right. It's raining at the moment. I can feel that. Gentle breeze. Sometimes it's windy out here. And now it's gaining speed. It's speedy at the moment. And so is that drizzle coming in.
Here is Gabbar again. 11 for none. Straight down the ground, all the way. Delightful shot off the bat of Hyder Ali. And that shot brought to you by Just Bukhara. A 6 will take the side to 17 for the loss of no wicket. 14 के औसत से रन बनाने उसका खास ख्याल रखना होगा यहाँ टीम कश्मीर नाइट्स के शुरुआती बल्लेबाजों को। हालांकि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, आपको मौका है रिकॉर्ड यानी कि तोड़ने का तो 276 रन बनाने और टीम को जीत हासिल करने के लिए। हैदर अली और उनके साथ जो मैदान के अंदर है तो लगातार चौके और छक्के, इससे पहले छक्का, एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। हालांकि अगर यहाँ से ये मैच जीतना है, इस साझेदारी को लंबा करना होगा, इस पार्टनरशिप को काफ़ी और बड़ा करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। हालांकि हैदर अली और मुदस्सिर डार को इस बात का भी इल्म है कि हमें पावर प्ले का खास ख्याल रखना होगा। पावर प्ले में ही एक अच्छी बैटिंग करनी होगी, तब जाकर आने वाले बल्लेबाज जो है कुछ फ़ायदा ले सकते और इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हालांकि आपके पास एक अच्छी बल्लेबाजी है, आपके काफ़ी ऐसे बल्लेबाज हैं जो जिनका एक अच्छा रिकॉर्ड है T20 में या काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, पर यहाँ मैच को देखकर, विकेट को देखकर, हालांकि हदफ को देखकर ही अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि आस्किंग रेट को देखकर ही बैटिंग करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। न सिर्फ यहाँ सिंगल डबल से काम चलाना होगा और बीच बीच में जब बड़े स्ट्रोक आते हैं तो यकीनी तौर पर दबाव और प्रेशर बढ़ जाता है गेंदबाजों के ऊपर। गवर हालांकि उनका ये पहला ओवर है, अब तक उन्हें करीबन 16-15 रन इस ओवर से और आए हैं गवर दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए ओवर द विकेट। एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे और लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, हालांकि इस गेंद की लाइन से अपने बल्ले को अलग किया और फिजा में बुलंद किया, जाने दिया और गेंद आई विकेट कीपर के पास, यानी कि जहां सरशील अब्बास विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे, वही अंपायर की तरफ से यानी कि जहांगीर जान जो मैदान के अंदर मुस्तफा के साथ अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। वाइड का इशारा एक्स्ट्रा की सूरत में 1 रन और 21 से बढ़कर 22 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पे। हालांकि यहाँ हल्का सा मिसफील्ड हुआ क्योंकि फसल पे वहाँ मंजूर डार तैनात जो ने एक अच्छी पारी और एक अच्छी बैटिंग की है, हालांकि रन बनाने का कोई और मौका नहीं मिला। 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल, टीम का स्कोर 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, यानी कि यहाँ से 12:30 के अवसर के करीबन 10:30 की औसत से रन बनाने शुरू कर दिए। तो इसी तरह बैटिंग करनी होगी क्योंकि शुरू से ही वो जो आस्किंग रेट है उसका एक अलग दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। वही अगर बात करेंगे प्रेशर की, क्योंकि इसके बाद सेमीफाइनल मैच भी है, बड़ा मैच भी, और यहाँ काफ़ी सारे क्रिकेट शायकीन मैच का मजा ले रहे हैं और इस मैच को जीतना है। जीतने के लिए टीम आई है तो बैटिंग अच्छी करनी होगी, शुरुआत अच्छी देनी होगी। समीर बेल एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए बात करेंगे और गेंदबाजी की ओर देखना होगा कि इससे पहले समीर बेल ने कोई ओवर किया या नहीं किया। और पहली गेंद, इस गेंद को कवर की तरफ खेला, उस और गवर्शी तैनात, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। बेल का यह दूसरा ओवर, इससे पहले 1 और 6 रन, कोई मेडन नहीं या कोई सफलता है। मेडन की बात करेंगे, 1 ही ओवर किया, यह दूसरा ओवर है उनका, हालांकि सफलता अभी तक किसी भी गेंदबाज को नहीं मिली। गवर रशीद ने 1 ओवर डाला और समीर बेल का ये दूसरा ओवर, पावर प्ले का तीसरा ओवर, 2.230 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 23 for the loss of no wicket. We are in over number 3. 2 dots on the trot from Samir Bell, keeping it tight, not allowing Hyder Ali to break free. Next one, it kicked off the surface. Hyder says, what can I do? That was unplayable one. It kicked, jumped, Haris off the deck. None for 23. So we are in over number 3. Next one, in the gap. He lets it go through, that's 4. This time he breaks free. Gets 4 for that. After 3 dots on the trot, he managed to break free. Breaking shackles is what they require at the moment. They need to break free. Their captain, a captive mood. They are jailed at the moment. Need to bail themselves out. 27 for none. Good shot straight down the ground. Stretch it Bell, but can't do well. Unable to stop. That's 4. 31 on the board. That 4 brought to you by Just Bukhara. Back-to-back boundaries, 3 dots, and now successive 4s coming for Hyder Ali. It's 31 for the loss of no wicket. They're chasing 276. Back away, makes room. Chance of stumping, gone down. Gone begging in the end. 3 gone. It is none for 31. A dot, and with that dot he finished his 2 overs. None for 14. This way he's gone for 8, and the other over considered just 6. He's bowling really well as far as Bell is concerned, and Bell bowled another great spell few days back in WCL World Cricket League.
and his spell sized him over the line. He sealed the deal with his spell the other day. It's none for 31 after 3 overs. No run at the moment. Light drizzle is on, but umpires and players are happy to continue and carry on. We need 2 more overs and a delivery and a ball. That means 13 balls. We are still away to find out that result. Somewhere we need 13 more balls. If it is around that over number 5.1, 1 ball down in over number 6, we're gonna find out. Yeah, I can feel that. We'll try to do that. Wait a minute. We'll surely do that. It's a no ball. He overstepped. As a spinner, he overstepped. 2 runs. There is a backup. It's 33 on the board. And it's still looking that mist and fog in the backyard behind the bowler. Is it okay? What can I do? I'm trying my level best. But it is still looking that blur. And to me, there is an issue, but it is overcast at the moment. Mist and fog in air, and that one. Neil is down on one knee and goes big and big enough. Enough on it. I understand Adil but it isn't working properly. I tried to wipe it thrice. It is still looking like the one you are getting at the moment with that mighty hit. Just we got a 639 for none. Inside edge. Will this one roll away? Samir Bell in pursuit. Unable to get to the ball. That's 4. It's 43 for the loss of no wicket. We are in over number 4. With that boundary, there is addition in score. It's 43 on the board. This over we saw 12 coming of just 2 balls as he produced a no ball to start with. He overstepped. Kashmir Knights are 43 for none, chasing 276. Bilalda writes in. In the meantime, here is Zaid again. Hyder cuts and cuts, but find his man in place. Not 4 runs at dot delivery. This is over number 4 we are in. 5.1, and if Friend comes after 5.1, we can simply go for that Duckworth, Levis and Stern method. Find out the result. 43 for none. Kashmir Knights chasing 276. Here is the next one. Upish in the gap. Bisects, cover and point. That's 4. It took little time to cross over for a wonderful boundary. Nazir Kumar writes in. With that 4, there is addition in score. That was brought to you by just Bukhara. 47 for none. Zabil Hussain writes in, playing on both the teams. Let me take you through the Hamdan Muraad Cricket Club. Wicketkeeper Sarshil Abbas. Samir Bell at fine leg, square leg. There is a man at long on. Irfan Mir. Zaid lefty operating with the ball. Zaid Nabi. Over pitch to 1. He was eyeing. He was trying to go over long on, and bowler a kind of a stare at batter. Walks away. It was a kind of a ploy. He used that flight trajectory to trap him, but he gets away with that one in the end. There is a man at mid of captain Imtiaz lefty. Extra cover Gabbar Rashid. Adil Dada at point. Backward a point Zaidar. Man at wide gully area. There is Manzoor Dar. This is Magam Sports Field. 43 for none at dot delivery. In between, next one again making a room, giving himself space and room. Doesn't connect. After 4 overs, it should be 47, I think, not 43. Well, let me confirm. It's 47 after 4 overs. What they need after 47 after 4 overs. What they need, Mansoor, after 5.1. What's the fast score as far as DLS is concerned? If DLS comes into play, you may ask Sunny Baba, and he may confirm, because he's got that chart in his hand. He's going through that again like that of वो कोच. वो लोग तो अपने में मस्त हैं. उन्हें इसके साथ क्या है, ये हमें भी ये जानकारी हमें भी रखनी पड़ती है. क्या रहेगा सूरत हाल, क्या नहीं रहेगा सूरत हाल.
हालांकि इस वक्त सर्दी है, बहुत मुश्किल है मैदान के अंदर कमेंट्री करना, यानी कि अपने अल्फाज को संभालना। 47 रन मुझे लग रहा है कि आज काफ़ी, और सर्दी जो है, और सर्दी ने हमें काफ़ी सताया मैदान के अंदर। पर सर्दी के अलावा खेल की सरगर्मियां मैदान के अंदर जारी है, और देखना होगा दो शुरुआती बल्लेबाज मुद्दसिर डार और हैदर अली जिस तरह से बैटिंग करे, तो यकीनी तौर पर इस तरह की बैटिंग की ज़रूरत और दरकार है टीम को, तब जाकर टीम इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है दूसरी पारी। और आप अंदाज़ा लगा सकते 250 से ज़्यादा जो लक्ष्य मिला है टीम को हासिल करने के लिए। 47 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे एक अच्छी शुरुआत, इसके बाद भी काफ़ी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी है। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज़ और मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर, हालांकि शेख नज़ीर आज नहीं है, बट मुनव्वर तनवीर ने जिस तरह दिन भर काम किया, तो मैं मुनव्वर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मुनव्वर तो लगातार आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। जाहिद नबी, जहां जाहिद नबी का पहला ओवर इससे पहले गया तो उसमें 16 रन आए, शायद उनका समीर बेल का ये तीसरा ओवर होगा। समीर बेल एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे, वो इस बार बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर, पर लेग स्टंप के काफी बार गेंद पीछी हुई थी। सवाल पूछा था पर नकारा। जहांगीर जान ने हंसते मुस्कुराते रन पूरा करने का मौका मिला। 1 रन और टीम के खाते में, इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में भी 1 रन का और इजाफा। हालांकि स्कोरबोर्ड ने सुबह से ही आज दिक्कत की है और सुबह से ही हमें परेशान कर दिया। स्कोर क्या है, और 1 टीम का स्कोर, 4.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। समीर बेल का ये तीसरा ओवर है, 15 रन अब तक दिए, यानी कि सफलता किसी भी गेंदबाज को अभी तक मिली है। और यहाँ हवा में गलत स्ट्रोक खेला, और यहाँ तो काफी देर तक गेंद हवा में बुलंद थी। एक बेहतरीन लाजवाब एफर्ट यहाँ मंजूर डार का, हालांकि दौड़ लगानी पड़ी, मुश्किल था ये कैच, छलांग लगाकर कोशिश की, पर यहाँ कोशिश तो उनकी बेकार साबित है, पर एफर्ट लाजवाब मंजूर डार का, यानी कि कैच करने का मौका तो नहीं मिला। टीम का जो स्कोर है 50 रन जा पहुंचा। जी हाँ, 50 रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पे। समीर बेल, अगर बात करेंगे बाकी सारे गेंदबाजों की, तो लगातार पहले विकेट की तलाश में अभी तक वो विकेट नहीं मिला। ऊपर से पावर प्ले का फायदा लेना होगा। यहाँ बैकवर्ड स्कलर बाउंड्री लाइन की तरफ खेला, उस पर सलीम मीर तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। यहाँ दोनों बल्लेबाज ने अपना अपना छोड़ बदला कि यहाँ ओवर थ्रू के रूप में एक और रन तेजी के साथ यहाँ चालाकी दिखाई, फुर्तीलापन दिखाया और दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने, यानी कि 2 रन और की टीम के खाते 51 रन टीम का स्कोर जहां पहुंचा है। 4.5 ओवर की गेंदबाजी में अंतिम और आखिरी गेंद आनी बाकी इस ओवर की, जिसमें समीर बेल की अगर बात करेंगे, उनका ये तीसरा ओवर, अंतिम गेंद तेज क्विकर का इस्तेमाल किया डॉट के साथ। तीसरा ओवर मुकम्मल और पांचवें ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। कुल मिलाकर जहां 51 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, आस्किंग रेट में लगातार इजाफा, 14.84 के औसत से टीम को रन बनाने, इसका भी खास ख्याल रखना होगा। सिंगल डबल से काम चलाए, सिंगल डबल के अलावा और बीच बीच में जब खराब गेंद मिलेगी तब बड़ा स्ट्रोक लेने से तो नहीं कतराएंगे बल्लेबाज, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें बड़ा स्ट्रोक लगाने की जरूरत है, दरकार है। आस्किंग रेट का खास ख्याल रखना होगा, विकेट बचा कर रखना होगा। वही पहले विकेट की तलाश में मुराद क्रिकेट क्लब के गेंदबाज in search of breakthrough. It's 51 for none. They are still in search of wicket number 1. Are they going to get that? Will it take some time to climb the first one? Hyder Ali on strike. He's in good form this time round. Zaid Nabi back for the second over. This is the last over mandatory power play. Where is this one? He's unaware of what's going on, isn't? He's unaware of it. Just like that. पता नहीं है हो क्या रहा है, होने वाला क्या है। It's 51 for none, unaware. We are in over number 6. First ball dot from Zaid Nabi. Hyder Ali waiting for another freebie. Oh, misfield, fumble. That's 4. And Zaid unable to stop that when he slipped. Little moisture in outfield. Because of that, his boot slipped a little bit. He falls apart and ball goes away for more. 55 for none. आउटफील्ड थोड़ा सा गीला है, फील्डिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि फिसलन है, और जिसकी वजह से वहाँ फील्डिंग करने में नाकाम साबित हुए। और जाहिद डार जिन्हें पॉइंट पर तैनात किया गया है, यानी कि और इससे पहले चौका, पर अब चौका नहीं, सीधे खिलाड़ी के पास जो गबर रशीद एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर 30 गज दायरे पे फील्डिंग करे। टीम का जो स्कोर है और 55 बिना किसी विकेट के नुकसान भी, और 5.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। Off a mark in over number 6. Zaid Nabi again. Flight and offer down the leg side. He's giving air and loop, trying to lure him into the big shot.
He's got long on in place, Hyder Ali, and he's got the man at mid wicket. I think good ploy to lure him into that big shot. He's got two men in place, one at long on, the man at mid wicket boundary waiting for anything loose on it. 56. Next one, Mudassir Dar is in trouble, I think, but he gets away with that one. He drops in no man of space. He's unable to middle the ball. Mudassir Dar is struggling. He's a good batter, but he also need to change gears to find the top tier. Got to put feet on accelerator. You need to accelerate now or never. It's gonna be too late then. It's 57 for none, chasing 276. Fly straighter, gone, done and dusted. Dismissal over wide mid on, and it's almost a cock on in the end for a maximum. अगर मेरी Just Bukhara 6. 12 रन यहाँ लिखता है स्ट्रोक पे. इतना बड़ा छक्का लगा, मुझे लग रहा है छक्का नहीं है, डबल लगा. We call that basser. वाह, बिल्कुल 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 बासर. यहाँ एक बड़ा छक्का and basser बासर बिल्कुल एक बड़ा one that has effect, that impact. बहुत बड़ा छक्का, बहुत बड़ा Well, छक्का. that's gone all the way. It's 63 for the loss of no wicket. Would have been one down, that catch gone down in no man's. To be precise, that wasn't a catch because that wasn't even half chance. The one we call the half chance, it should kiss some border body, but that wasn't close to the man. In the end, it dropped between two men who were trying to converge at a point. 63 for none after power play. Power play comes to an end. Power play done, dusted. Kashmir Knights are 63. They are still 204 runs behind. 203 runs behind it is it? No, they are 213 runs behind. They are chasing 276. 63 for the loss of no wicket. Side number 2 was none for 27. Back for his third. Overall, more over 7th over underway. Bell is gonna carry on and continue. He's gone for 17 of his 3 overs. Tight spell again. He's bowling really well. Mudassir Dar on strike. Wicketkeeper up to the stump, Sarshil Abbas. Mudassir Dar need to middle, and he is unable to find that middle of the bat. He's struggling at the moment. But this time he connects. There is a man. Will he get to the ball? And he dropped. That's gone on the full. I think we'll have to wait and watch. Umpire will decide. Mustafa says that's a 4. That's a boundary. But I thought that gone on the full. But he believed that it's on the bounce into the fence. 67, first ball goes for 4. Effort goes in van. Should have been taken. With that 4 there is addition. 67 for the loss of no wicket. Second one, improvise, and he improvised it to perfection. Over fine leg for 6. That 6 brought to you by Just Bukhara. 73 on the board, and they are 203 runs behind. What could be the magical figure to touch late afternoon here at the centre? 73 on the board, and it was better to go with that Gabbar to open the innings. It was better to use Gabbar at the top of the order. Gabbar बड़ी अच्छी पारी खेलनी होगी गबर को, क्योंकि गबर पे भी काफ़ी अच्छी जिम्मेदारी है. तो हर किसी की नज़र रहेगी आज लतीफ़ गब्बर के ऊपर या बट शौकत के ऊपर या बाकी सारे आने वाले बल्लेबाजों के, बल्कि जॉन मोहम्मद भी इनके पास है, वो भी एक अच्छे बैट्समैन है. तो मुदस्सिर और उनके साथ जो हैदर अली 48 पर नाबाद 26 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया अपनी, और निसफ सेंचुरी के करीब, अर्धशतक के करीब नज़र आ रहे. तो अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है, हम कह सकते हैं. एक ठोस शुरुआत मिली है टीम को. तो आस्किंग रेट का भी एक अच्छा खास ख्याल है, क्योंकि 2 गेंदों में 10 रन आए. तो मुझे लग रहा है कि सिंगल डबल से आप जाकर इस ओवर को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, पर जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला. यहाँ लगातार ठान लिया कि हमें चौके और छक्के लगाकर पूरा प्रेशर बनाना होगा, और एक और चौका निकलता हुआ. खाली इस गेंद को गाइड किया अपने बल्ले से टकराने भर दिया और गेप का सही इस्तेमाल किया वहाँ बैट्समैन मुदस्सिर के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका. जस्ट बुखारा मागाम का मुदस्सिर की बात करेंगे, जिनका ताल्लुक बांडीपोरा से, और आज उसे इस टीम के साथ खेलने का मौका मिला, यानी कि अपने आप को साबित करने का मौका मिला. एक बार फिर बड़ा छक्का निकलता हुआ मुदस्सिर के बल्ले से, एक और बड़ा यानी कि छक्का जस्ट बुखारा मागाम का. 6 रन और छक्कों की बारिश और बरसात. इस ओवर ने काफी रन दिए, यानी कि यहाँ टीम और कश्मीर नाइट्स को, यानी कि और कुछ ऐसी ओवर्स हैं जिनको बड़ा करना होगा, तब जाकर यहाँ जीत मिल सकती है.
कश्मीर नाइट्स की टीम को और 37 रन अब तक खर्च किए समीर बेल ने और 3.5 ओवर की गेंदबाजी में। चलिए यहाँ पे काम तमाम बैट्समैन मुद्दसिर का 30 रन बनाए, 17 गेंदों का सामना किया और आखिरकार समीर बेल को और चलते चलते अपने कोटे का अंतिम ओवर करे थे और यहाँ और इस ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट मिला। इस साझेदारी को तोड़ा समीर बेल ने, पहला झटका लगा कश्मीर नाइट्स की टीम को। मुद्दसिर मैदान छोड़कर वापस जा रहे। हैदर अली ने 48 बनाए नाबाद और 26 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया। It's first one down here. First wicket is gone and down. Mudassir Dar is clean bowled up the bowling of Samir Bell. He gets rid of one of the batters. The opening stand is broken. He goes back to pavilion. It's one down, 83 for 1 after 7 overs. Who comes in at number 3? It's Lateef Dar, locally known as Gabbar, and that too for a reason. Need to prove that Nam and Fam today. Got to go and play that knock of his life, as they're chasing 276 after 7. They're 83. They need to carry on with the same pace. They're going 11 over, but they need to improve it a little bit. Their group need to improve, as they are going 11 and over. They need to try and go 15 and over, around that, to make things happen here at the center. 1 for 83 after 7 overs. Over number 8 is about to start. Manzoor Dar has got his quota of 4 overs. He's yet to operate. Imtiaz lefty, not bowled yet. Well, you have a different kind of mindset in the valley, different ideology. Well, you can't explain to anyone in the valley. We have a different kind of genius here in this part of the world. Knowing that camera is in place, still knowing in front, how you can explain it? One should understand that it is quite evident. The one who's got the eyes should look and try to walk away. 83 for 1 after 7.1. This is over number 8. Imtiaz lefty, captain for the first time, is going to roll his arm. First ball, just a single. Kashmir Knights under the pump. Tight situation for Kashmir Knights. Need someone who can go all off, who's going to bat through the innings and go after the bowlers, who can up the tempo. Do they have someone? And next one somehow gets hold of that one. Now top to the mark, not in complete control, but he's going to take that 4. It hardly matters how they come. Lateef and Kashmir Knights need runs. They are 88 for the loss of a wicket, as we are in over number 8. The next one, that's a great shot on the bounce into the backward, a point boundary for 4. 2 back-to-back boundaries that were brought to you by just Bukhara. It's 92 for the loss of 1. We are in over number 8. Long way to go. Job isn't done. Can't be rest assured. It's important for batters to go after and keep themselves in the chase, in the hunt. That one, Apish and Zaidar says it's wide of me, and it was wide of Manzoor. 2 on that occasion. It's gone between Manzoor and Zaidar, bisecting, earn him a boundary. Another for 96 on the board. This is just 8th over underway. 3 boundaries. 3rd boundary for Lateef Dar. He is on to 12 of just 3 balls, and he's known as Gabbar. And one of the famous dialogue in the valley, that is Gabbar Bhai, is that one that's gone all the way. 6 more, and with that 6 over backward, a point again. It's 100 up, 1 or 2 for Kashmir Knights in over number 8, and Lateef Dar moves straight in of 4 balls. What a knock, what a cameo. But it's going to be mind-blowing if he carries on, if he cashes on. He switched on that gear to find the top tier. Here is the next one. Good delivery, battle line this time.
Latif Dar is trying to hit each and every ball. He's in mood. I think he switched on that gear and he knows that there is no look back. We need to go after each and every ball. I think he understands his role very well. That's why he's just trying to use that long handle, but this time that was a good delivery. He shot under the length and capped it little short on that occasion. He capped a little low, but somehow blocks it 1 or 2 for 1 after 8 overs. 12 overs, they're 174 runs behind. मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप कहते रहो, क्योंकि मेरी हालत ख़राब है सर्दी से। कसम से मेरा जो शरीर है इस वक्त दर्द से, यानी कि वो जो दुख रहा है, सर्दी ने पूरा सताया शरीर के और हर हिस्से में। आप जाकर मुझे लग रहा है कि सर्दी की जो लहर है वो काफ़ी तेज़ दौड़ रही है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि आपने अपर भी पहन रखा है, मैंने आपकी हिफाजत की है, तो ज़रा अल्लाह आपकी हिफाजत करे और मेरे लिए और काम को आसान कीजिए। 102 रन 1 विकेट के नुकसान पे और 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 14.50 की औसत से, यानी कि 15-15 की औसत से रन बनाने होंगे। यहाँ खेला ज़रूर अक्रॉस द लाइन, घुटना ज़मीन से टेका था, मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते, पर एक अच्छा टप्पा और एक अच्छी यहाँ के टर्न मिलती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। फिदा हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। कुछ इंतज़ाम करो मेरे लिए, वरना मुझे लग रहा है कि जान जाने का खतरा है। The next one, it's little fuller this time. He gets hold of that. Well, Dardish Guniga trying to get close to the ball. He took blinder in WCL, getting rid of Sajjad Sultan, and that changed the game completely. Otherwise, they were very much in with a chance. He was just trying to replicate what he did other day. It has that in style RJ Parveen video. And he's talking that you are a weak person. Thank you very much. 108. It's ball number 3, which ended up in a dot. Well, a dot delivery here is like gold dust. 3 balls could connect to 1 shot. He brings up his 50. That 50 brought to you by Just Bukhara. Sohail Pare is watching from Beach Bihara. Upish and in the gap. Race is away. Race is past. 112 on the board. But need to avoid playing dot balls. Need singles in place of dots so that they can keep their campaign alive. Idris Dar is here, the son of Idris Qayyum, the son of Abdul Qayyum Dar, the man who's behind Frundus Motor Snarable. Heads up to both. Thank you very much for your love, buddy. Adil Rashid, your commendable words, your wonderful feedback. Just short of Samir Bell, who was waiting to do his level best and well. It's 113 for the loss of 1. This is 9th over we are in. The last ball of over number 9 is coming up. Apish, easy one, taken. Kashmir Knights are 2 down. 113 for 2, and Latif Dar departs. He throws his bat at it. Wasn't up to the pitch. It is 18 of 6. A cameo, little cameo comes to an end. 9 gone, 113 for the loss of 2. 113, 1 विकेट के नुकसान। 9 ओवर के बाद 113, 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की शुरुआत हुआ चाहती है, होने जा रही है, तो कश्मीर नाइट्स को एक बड़ा दचका, बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। Caught behind, scare on the off, caught by Zaidar, good catch in the end, but to me it was a simplest one. Holding on to the ball under certain circumstances is never easy. It's biting cold. What we were experiencing during winter season here, November, December, January, then Feb, and it's bit like that in month of May, which is the 5th month. Yeah, exactly. Congratulations to the team, boys, and that grew, making it the finals for the first time. This is 4th edition. You failed thrice in the tournament, and it's the 4th occasion, and you're into the finals of the tournament. It took a lot of time, but finally they're there. One hand at the trophy. DL, they're over the line. It's 113 for the loss of 1. Zaidar walks away as I sort out that DLS, and it's 113 for the loss of 1. 10th over underway. Look at that one, he missed that one completely.
and it's going to be. And I took care of my stand, and that's the problem doing commentary within the play field. And I felt that kind of a current in my body when I took that one. What can I do? Come on. What is the fun behind? What is the funda behind? What can I do? What else I can do? That's a good shot straight. There is a man, but that's gone all the way. That's going to elude him, and it eludes him in the end. That six brought to you by Just Bukhara. Kashmir Knights need runs. Murad need wickets at this very crucial juncture, but they're holding the upper hand. And Mansoor comes in with something special that's gonna preserve his body. The next one, a kind of a gentle dab. Scamper through. It's over to you. 120 शायद है स्कोर, क्योंकि स्कोर बोर्ड थोड़ा सा गलत है। नज़ीर कुमार साहब खानपुरा बारामूला से बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। 121 से बढ़कर 122, 2 विकेट के नुकसान पे ये है अब तक का स्कोर इस सेमीफाइनल मैच का। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। चलिए, बल्ले से हस्ताक्षर, यहाँ गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का इस छक्के की मदद से टीम का जो स्कोर है धीरे 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 लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 276 का जो लक्ष्य मिला है और उसका जवाब दे रही है मैदान के अंदर कश्मीर नाइट्स के और बल्लेबाज वही हैदर अली। और उनका विकेट पे रहना न सिर्फ यहाँ ज़रूरी है, बल्कि उनका आखिर तक खेलना आज लाजमी है टीम कश्मीर नाइट्स के लिए, तब जाकर यहाँ कश्मीर नाइट्स की टीम को जीत मिल सकती है। अब तक का जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल की बात करेंगे तो वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश। 129, 129, 2 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 10 ओवर 60 गेंदें अभी भी आनी बाकी इस ओवर की। अगर मैं और गेंदों की बात करूं तो, और यहाँ 60 गेंदें 147 रनों की दरकार ये मैच और ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 147 रन, हालांकि वो तो गए मुनव्वर खुद जाकर वो उसका जांच करेंगे बाद में, उन तक हम अपडेट पहुंचाएंगे कि डीएल का क्या रहेगा सूरत हाल और डीएल में किसने ये मैच जीता, क्योंकि अगर बारिश हुई तो डीएल के लिए ज़रूर जाना होगा। हालांकि हर कानून का पालन और हर कानून को फॉलो करना पड़ता है। चलिए, यहाँ मैच बड़ा दिलचस्प है और यहाँ लगातार छक्के, बट यहाँ गेंद हवा में नीचे, खिलाड़ी देखना होगा, कैच लिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे और विकेट मिला हैदर अली जो लगातार बड़े स्ट्रोक लगा रहे थे, पर अब फंसाया उसे गेंदबाज मंजूर डार ने। हालांकि मंजूर डार ने सफलता हासिल की, मंजूर डार को लगाया गेंदबाजी करने की, उन्होंने विकेट हासिल किया और बल्लेबाज हैदर अली को अपना विकेट गंवाना पड़ा। ये एक बड़ा नुकसान, हालांकि इस साझेदारी को तोड़ना था या इस बल्लेबाज का विकेट हासिल करना था। 60 गेंदें यानी कि अब 59 गेंदें आने बाकी, 147 रनों की दरकार। मंजूर डार अपना यानी कि पहला ओवर करने के लिए और पहले ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने विकेट हासिल करके हैदर अली को चलता किया। अभी भी 147 रन जीत से दूर टीम, 3 विकेट करीबन अब तक 3 बल्लेबाज वापस चले गए। देखिए, बड़ी बात है कि जब एक बड़ा लक्ष्य मिलता है हासिल करने के लिए टीम को, तो टीम को खास ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि और ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि आस्किंग रेट का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है, और उसका खास ख्याल ज़रूर रखा था यहाँ बल्लेबाजों ने। और शुरुआती बल्लेबाजों ने आकर ताबड़तोड़ हमले ज़रूर किए थे, पर ये बड़ा स्कोर है, ये एक ऐसा स्कोर है जहाँ पे न सिर्फ एक बड़ी पारी खेलनी है बल्कि ताबड़तोड़ हमले लगातार करने। कुल मिलाकर क्या है अब तक का सूरत हाल, 129 रन, 2 नहीं 3 विकेट गंवाए, क्योंकि स्कोर बोर्ड जो है वो थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा है और हमारे साथी कमेंटेटर जो मुनव्वर तनवीर उस पर लगातार काम कर रहे हैं, पर सुबह से ही आज इस स्कोर बोर्ड ने हमें परेशान कर दिया। 10.1 मंजूर डार का पहला ओवर, पहले ओवर में पहली गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन सेट बैट्समैन हैदर अली का विकेट हासिल किया। नए बैट्समैन देखना होगा क्या झंडा का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ मुश्ताक जेडी झंडा अब जाकर बैटिंग करने के लिए। मुश्ताक जेडी आते आते यहाँ रन पूरा करके, हालांकि लेग बाय का इशारा अंपायर जहांगीर जान की तरफ से एक अच्छी साझेदारी के साथ यहाँ
और आस्किंग रेट का भी खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर आपने आस्किंग रेट का खास ख्याल नहीं रखा तो ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये सबसे बड़ा परेशानी का कारण बनेगा यहाँ कश्मीर नेट्स के लिए। और लेग स्टंप के काफी बार दिशा इन गेंद, खराब गेंद खेला गेंद को, और गेंद फाइन लेग के खिलाड़ी जाहिदार को बीट करती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन। और हालांकि टीम को भी मालूम है, बल्लेबाजों को भी मालूम है कि यहाँ हमें ये लड़ाई जो है आखिर तक लड़नी होगी हमें यहाँ, और बड़े स्ट्रोक लगाकर ही जीत मिलेगी। सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं, हर डॉट गेंद से दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ तो आगे आकर गेंद को बल्ले की बीच भी टकराने भर दिया, पर गेप नहीं मिला सीधे दर्दिश के पास। हालांकि इनके पास काफी अच्छी गेंदबाजी है। अगर मैं गेंदबाजों की बात करूं तो या इम्तियाज के अलावा दर्दिश भी गेंदबाजी करना जानते हैं, या उसके अलावा कई सारे ऐसे गेंदबाज हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया टीम के कप्तान ने। एक अच्छा मुकाबला, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस वक्त मैदान के अंदर जा रही है, क्योंकि यहाँ एक एक रन, एक एक विकेट, एक एक डॉट अब जाकर इस मैच का फैसला करेगा। यहाँ और मिड विकेट की तरफ खेला, दोनों बल्लेबाज ने अपना अपना छोड़ बदला, यानी कि 2 मरतबा 2 रन और टीम के खाते में। लेकिन बीच बीच में हम स्कोर बोर्ड को लगातार अपडेट करते रहते हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज नेटवर्क ने सुबह से ही यहाँ सताया। टीम का जो स्कोर है करीबन 130 से ज्यादा, 3 विकेट के नुकसान पे। डारिस ओवर में अगली मरतबा यहाँ हस्ताक्षर, हवाई रास्ते, काफी लंबा और बड़ा छक्का यहाँ, और अंतिम गेंद पर, यानी कि देखना होगा क्या यह मुश्ताक के बल्ले से निकला या उजैर शबीर के बल्ले से निकला, पर यहाँ बड़ा छक्का मुश्ताक ने उजैर शबीर के बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर गई। एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। अगर डीएलएस की बात करेंगे तो उसमें आगे हैं या टीम मुराद 9 रन, बिल्कुल 9 रन आगे है। ये जानकारी हमारे साथी और मेरे दोस्त इदरीस भाई इस वक्त बने हुए, इदरीस भाई की तरफ से ये जानकारी आई है, और जिनका कहना है कि जो कुयम साहब के फर्जंद है हमारे कॉम बॉक्स में, उनका कहना है कि 9 रन हालांकि आगे हैं। अगर डीएलएस के लिए जाना पड़ा, अगर बारिश ने यहाँ इस मैच को मुतासिर किया, अगर बूंदाबांदी लगातार जारी रहे तो फिलहाल वो तो और उस तरह की खुशी तो जरूर रहेगी यहाँ टीम मुराद को। अभी भी काफी सारे रन आने बाकी, काफी सारे ओवर्स आने बाकी। 15-15 की औसत से टीम को रन बनाने, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, एक मजेदार मैच है। ऐसे में न जाने कहां जाएगा मैच और मुकाबला, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर अगर बारिश आई तो बारिश के हिसाब से, और यहां मुराद की टीम तो 9 रनों से आगे हैं अगर डीएलएस के लिए जाना पड़ा। फिलहाल गेंदबाजी में देखना होगा क्या और किसी गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, पर यहाँ गब्बर रशीद का भी आकर इस्तेमाल किया। इस वक्त हल्की सी बूंदाबांदी मैदान के अंदर जारी। मुनव्वर तनवीर ने आप जाकर यहाँ छाता पकड़ा। मुनव्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने वहां बाहर से मुझे लाना पड़ा जैकेट अपने आप को गर्म करने के लिए, क्योंकि आप तो सुबह से ही गर्म थे और मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी सी गर्मी आई तो मैंने भी आप बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि सर्दी में अपने अल्फाज को संभालना ये बहुत मुश्किल होता है। नजीर साहब को हम बड़ा मिस कर रहे हैं, क्योंकि नजीर साहब भी हमेशा कड़ाके की ठंड में तपती हुई धूप में लड़ते हैं और लड़ने की क्षमता रखने वाले कमेंटेटर है। कवर मिड ऑफ की तरफ खेला दर्दिश को, हालांकि फील्डिंग करने का मौका मिला था पर यहां हल्का सा फंबल हुआ, रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और टीम के खाते में। पारी का यह 12वां ओवर। दर्दिश की बात करेंगे, शायद इससे पहले उन्होंने कुछ गेंदबाजी की या नहीं की, जरा उसको भी चेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें खुद जाकर बार बार स्कोर बोर्ड को ठीक करना पड़ता है। और यहां दर्दिश ने इससे पहले 1 और 17 रन, और ये उनका दूसरा ओवर। 1 रन और टीम के खाते में। की गेंद ठीक तरह से बैट पर नहीं आई। मुद्दसिर और उनके हालांकि उजैर शबीर और मुश्ताक जेडी जंडा की जोड़ी मैदान के अंदर। गब्बर रशीद की बात करेंगे, अभी तक विकेट नहीं मिला, खर्चीले साबित हुए इससे पहले, और 1 ओवर में 17 रन खर्च के आप जाकर 2 रन और 20 रन कुल मिलाकर अब तक खर्च के 143 से बढ़कर 144 रन टीम का स्कोर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार तो धीमी रफ्तार से ऑफ स्टंप के काफी बार। आप क्यों खफा हैं अंपायर जहांगीर जान से? उन्होंने सही फैसला लिया, क्योंकि काफी दूर थी गेंद। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। एक्स्ट्रा की सूरत में 1 रन और टीम के खाते में। मैदान के अंदर इस वक्त उत्साह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ फयाज अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आस्किंग रेट की बात करेंगे, उसमें लगातार इजाफा, ये सबसे बड़ा परेशानी का कारण है यहाँ टीम के लिए। Well, exactly. It's a tight situation over here at the center because DLS is in place now. It is showing us with every passing ball. That's a good delivery. Pull of one, extra bounce again. Ball is bouncing up the deck, and Murad will be praying that trend should come in because they are ahead of Kashmir Knights at the moment. And anything, if you are just a run ahead, you're going to win this one. You're going to take away the game. They are 12 runs ahead at the moment.
just 12 and by his Sam. The next one, that's a good shot straight down the ground. Big chase for Adil Dada there, and he gets to the ball and stops the ball. What could have been? और उस ओर खिलाड़ी तैनात था कि एक फुल टॉस, ज़्यादा लाभ नहीं मिला, सीधे बल्ले से खेला ज़रूर, पर पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन पूरा करने का मौका मिला। हालांकि हर किसी की कोशिश, हालांकि हर कोई तो यही दुआ कर रहा है कि मैच पूरा हो जाए, क्योंकि यहाँ दर्शक काफ़ी तादाद में इस मैदान के अंदर इस मैच का मज़ा ले रहे। पर ये अल्लाह की मेहरबानी, अभी भी मैच मैदान के अंदर चल रहा है और देखना होगा क्या मैच पूरा होगा या बारिश के नाम होगा। यहाँ एक अच्छा स्ट्रोक लिया, पीछे खिलाड़ी तैनात है, पर यहाँ गेप का इस्तेमाल करना होगा। पीछे खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन पूरा करने का मौका मिला। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पहली टीम बनी थी आज फाइनल में दाखिला लेने वाली फ्रांस मोटर्स नार्बल की टीम, जिन्होंने आज आसिफ मंजूर की उस सेना को यहाँ शिकस्त देकर खुद यहाँ फाइनल में क्वालिफाई किया। यह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, यानी कि कहने का मकसद इतना बड़ा लंबा सफर किसने सोचा था कि किस किस टीम को जाने का मौका मिला, क्योंकि क्रिकेट में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे में फिलहाल एक टीम तो आई है जिन्हें फाइनल में जाने का मौका मिला, और सुबह का मैच था, ये दिन का दूसरा मैच है। और अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि न जाने यहाँ कौन सी टीम जाएगी जिन्हें फ्रांस मोटर्स नार्बल के साथ बाद में फाइनल खेलना होगा। गबर रशीद मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, स्कोरर जो है, और हमारे मुनव्वर तनवीर कभी कभार स्कोर बोर्ड भी काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा कर। इस ओवर में अगली मरतबा यहाँ पे और स्ट्रोक जरूर लिया, पर पीछे खिलाड़ी तैनात, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। मंजूर डार, जिन्होंने आज एक अच्छी बल्लेबाजी की। डार की मैं अगर बात करूं तो मैंने सुना था उसे कश्मीर नाइट्स के साथ खेलने आना है इस मैदान के अंदर, इस टूर्नामेंट में, पर अचानक मैंने आज उन्हें मुराद की टीम के साथ देखा। हालांकि पहली मरतबा बिल्कुल आज मुराद के साथ मैंने पहली मरतबा उसे इस मैदान के अंदर यहाँ खेलते हुए देखा, पर एक अच्छी बल्लेबाजी की और कुल मिलाकर कितने रन बनाए मुनव्वर आज मंजूर ने, और करीबन बिल्कुल 30 से ज्यादा रन बनाए, और करीबन 10, 12, 15 गेंदों का उन्हें सामना किया, और 147 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 48 गेंदों में 129 रनों की दरकार, 147, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पे। ये है अब तक का सूरज हाल, 48 गेंदे 129 रनों की दरकार। क्या आपकी क्या राय, क्या टीम बना पाएगी? हमारे साथ सोफी मुस्तफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते जो इस वक्त हमारे साथ मजा ले रहे। देखिए, और मुस्तफा क्या कहें, मौसम ने पूरी तरह से यहाँ परेशान करके रखा, पर हमारी ड्यूटी, हमें अपनी ड्यूटी को निभाना पड़ता है। वही मुश्ताक जेडी मैदान के अंदर जो बल्लेबाजी करे, उजैर ने काफी अच्छी पारी खेली है, पर इस पारी को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा, तब जीत मिल सकती है। 10 गेंदों में 27 रन बने। नई आए गेंदबाज इस ओवर में पहली मर्तबा हल्के हाथों से गेंद को पॉइंट की तरफ खेला, तेजी के साथ यह रन पूरा कर रहे, रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, यानी कि 1 रन और 148, 3 विकेट के नुकसान पे 47 गेंदों का आना बाकी, 128 रनों की अभी भी दरकार। गबर रशीद का यह तीसरा ओवर, 23 नहीं 24 रन खर्च करके कोई मेडल नहीं, कोई सफलता। 3 बल्लेबाज चले गए, कि हैदर ने गैर जिम्मेदार स्ट्रोक खेला, क्योंकि वो अच्छे तरीके से मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें, और ठीक तरह से गेंदबाज रास आ रहे थे, और अचानक जाकर उनकी आग्रता भंग हुई, उन्हें अपना विकेट गवा। यहां बड़ा स्ट्रोक है, जरूरत है बड़ा स्ट्रोक लगाने की। लॉन्ग ऑन के ऊपर से आदिल दादा दर्शक बन गए, और गेंद सीधे स्टेडियम से बाहर। एक और छक्का यहां जस्ट बुखारा मागाम का, क्योंकि यहां छक्कों और चौकों में डील करनी होगी, और तब जाकर यहां मैच जीत सकती है कश्मीर नाइट्स। 122, यानी कि अभी भी बनाना है 46 गेंदों का आना बाकी। इस ओवर की बात करेंगे, इस ओवर में अब तक 7 रन आए, यानी कि 4 गेंदें आने बाकी है, तो जरूर ये बड़ा ओवर, इसे ओवर को बड़ा करने की कोशिश करेंगे इस बार भी। और हालांकि बड़ा स्ट्रोक लिया जरूर, पर पीछे खिलाड़ी तैनात, 3 गेंदों में 8 रन आए, 155 टीम का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे। आस्किंग रेट की बात करेंगे, वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, 15.91 के औसत से, यानी कि 16 के आसपास आस्किंग रेट नजर आ रही है। लेकिन जब तक मैदान के अंदर उजैर और मुश्ताक है, और तब तक हम ये कह सकते हैं कि ये मैच जो है काफ़ी दिलचस्प है, और ये नहीं कह सकते यहाँ जीत मुराद की है, और हम ये भी नहीं कह सकते यहाँ कश्मीर नाइट्स के, पर मैच बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आए हुए और दर्शक इसीलिए आते हैं कि हमें एक पैसा वसूल मैच या क्रिकेट देखने का अवसर मिले, वो मौका मिल रहा है यहाँ दर्शकों। हालांकि अगर यहाँ से विकेट उन्होंने गंवाया, इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ा, तो बाद में मुश्किल होगा इस मैच को जीतना। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, इस बार
खींच कर लाया गेंद को, पीछे सलीम मीर तैनात है चहलकदमी के साथ। 1 रन और टीम के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में भी 1 रन का और इजाफा। जो हदफ मिला था, आप सभी को मालूम है कि पहली पारी में टॉस जीतकर 275 रन बनाए थे और मुकर्रर 20 ओवर में 276 का जो लक्ष्य मिला उसका पीछा कर रहे हैं मैदान के अंदर कश्मीर नाइट्स की टीम। 156 3 विकेट के नुकसान पे। यहां हवा में गेंद नीचे सलीम मीर आ रहे, देखना होगा क्या कैच लिया जाएगा। जी हां, सलीम मीर ने कैच लिया। यहां उजैर शबीर ने अपना विकेट गंवाया और जाहिद ने यहां सफलता हासिल करके एक और बल्लेबाज को चलता है क्या जाहिद के नाम दूसरा विकेट। 47 रन खर्च किए और टीम का जो कुल मिलाकर स्कोर है 156 4 विकेट के नुकसान पे। Well, how I can explain to our beloved listeners and viewers that camera is installed here. Even with the naked eye, they are walking in front of the camera. This part of the world, we have different kind of genus. Hold this, please. And it's hard to explain it to the people living in this part of the world. It's just like that, hard nut to crack. It's a different kind of diversity Allah has blessed with. This part of the world, it's 156 for the loss of 3. There is a short pause in the game. Look what's going on. Even with the naked eye, he can't see that. Unfortunate. It's 156 for the loss of 3. 120 more runs needed from 43 balls. That means 7 overs remaining. 13th run away. They will never understand what's going on. Believe me. But I hope they will try to walk away. This isn't good at all. Unfortunate scenes here at the center. Unfortunate. 156 for 3. This is a different biodiversity, I told you earlier on. It's a kind of a different gene and DNA plus RNA. इसको कहते हैं, इनको समझाना चलते हुए जहाज को हाथ देने के बराबर होता है। Allah has created a different kind of a DNA for this part of the world. Well, in the meantime, it is 156 for the loss of 3. They are 120 behind 43 runs and the DLS bar is showing that it should be 178 at the moment. Kashmir Knights. It is 156 they are. It means they are around it's 156, then makes it 60, 70, 22 behind that one. Where is this one going? On the bounce into the fence. And with that 4, it's going to change that calculator again. It's going to fluctuate again. It's 160 for 3. And Mudassir Mallarats Munawar, it is the same boat in which every Kashmiri is floating, no doubt about that. Agree with this. Just second to your opinion, buddy. They're 20 runs ahead as far as they are 20 runs ahead as far as DLS is concerned. So Imtiaz Lefty need 1 or 2 tight overs here or 1 more wicket here to turn the tide and turn the table completely other way. The next one wide of the off, gonna be wide. It is a big wide. 161 on the board. They are still 115 behind. They are chasing 276. As Mansoor Aziz need this kind of therapy again and again. And this is the only therapy that's going to treat Mansoor Aziz. 115 for the loss of 41. Here is the next one. Good shot, straight, drilled, down the ground. But Dada does well, but look at that shot. The non-striker, Shahid, not looking for cover at all. He was just trying to bite the bullet. It was an easy one. It was a hit hard. Thank you very much, Wasim Akun and others. 114 needed of 40 balls. Tough job. An uphill toss. Tough ask and chase for Kashmir Knights. Imtiaz Lefty playing that captain's knock. Responsible knock. And some of the irresponsible shots from Hyder and others that cost Kashmir Knights heavily and badly. And that shot from Latif Gabbar, that was nothing shot, Mansoor. To me, the 164 or 162. They are 164, I think. Let me confirm. It's 163 for 413 more needed of 39 balls. Gabbar Rashid is operating at the moment. The Sirmallah, thanks a lot, buddy. Thank you very much. No, it's installed within the field and everyone should try to see and watch around. It's important. A wide of the off. Again a wide delivery. With that extra run, it's 164. It should have been 184 on the board at the moment, but it is. You may check it again, refresh it again.
It should have been 184 after 13.3, but they are 164. They are 20 runs behind. That means it is enough. They're holding the upper hand, Muraad Cricket Club. They're almost there. 20 ahead. The next one, that is a big shot. There is a fielder. There is a man. Will he be caught? And that is gonna deteriorate Kashmir Knights and their situation. And it's gonna slip away further. And with that wicket, it is gonna take this game away from Kashmir Knights. And that is drifting away. तनवीर अनकरीब IPL में जाएगा commentary करने के लिए इंशाल्लाह. It is just like that. Someone writes in, thank you very much Fayaz Saab for your kind words, but Mansoor, it is just like a dream come true. If it's nearly impossible, but I hope that may Allah open up ways for us so we could make it to that, we could make final cut to it. 112 needed of 38 balls. Gonna be tough. It's almost all over to me. Because they are how many runs behind as far as DLS is concerned? They're around 20 plus behind. That means Murad holding the upper hand. Ran should now come in and end up the all the things here. End up the story between Kashmir Knights and Murad Cricket Club. But Ran isn't coming in. Everyone was expecting heavy ran. It's 164 for 4. That's the only thing that would have saved Kashmir Knights. But we have DLS that will decide the fate of this one here at this Sunday, the second semi-final underway. It looks like the Murad will face Frundus Motors on 11th of May. That's going to be a super Sunday, and people will try to make fun on their day. It's going to be fun day Sunday, and come this way, find it out here at the Sunday which one will lift to the trophy. Down the leg side, white signalled. Good call from umpire again. It is Jahangir John Mohammed, who's the strike umpire, and the new man comes in is John Muhammad for Kashmir Knights. They open it with Hyder and Mudassir Dar. Next one inside the line. A kind of a pat on the ball. Directed need. Would have been on his way back to pavilion, but is lucky to survive. 166 for the loss of 5 wickets. Kashmir Knights are almost out of it. Well, 166 for the loss of 5, 110 away, 37 balls remaining. A lot of comments are coming in, and this is the another thing. Lot of things coming in, and this is the another thing. Walking in front of camera. Well, Allah has blessed us with something special. The 2 eyes. For what purpose we have? And Abdul Qayyum writes in, you should not be biased. How can you say Ran should come now? No, Abdul Qayyum, I agree with your statement. I just second your opinion. I don't mean that Ran should come in for that purpose. I mean it should come in because people here, they're feeling that cold atmosphere here at the sun. It's biting cold. The love for the game is of next level. They don't want to leave the center. I'm just telling you and trying to explain it that it should not end up because matty surface, I think it's wet at the moment. The other thing is that outfield is also wet. If anybody slipped, that may cause a problem. The other thing is that they're feeling that cold wave at the moment. That's going to be another concern because later on these may feel, when they reach home, they will feel that pan later on. So to get rid of that, I said these words. Thank you very much for your opinion. Nonetheless, I'm going to take your words in a positive manner. Thank you very much for your assisting feedback. Well, it is. You may carry on, please. Well, I can't see this going on again and again. Coming in front, don't know the lesson and don't know who we are and what should we do as human beings. That one flies off the top edge, leading edge, goes behind everyone down to the third man for 4. And look, we have a big space here, a kind of a corridor, still coming in front. What is the fun behind that? I can't understand. आप इनको अगर दोषी ठहराओगे तो मुझे लग रहा है कि आप भी गलत है. मैनेजिंग बॉडी कहाँ है, ऑर्गेनाइजर्स कहाँ है, और जिनको ये संभालना है, जिनको इस भीड़ को काबू करना है, जिन्हें यहाँ डिसिप्लिन रखना है, वो कहाँ है? वो सोई हुई है.
हम मुसीबत में फंसे हुए, हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते, उनका ये काम है, उनको ये काम करना है कि लोग क्या करें, कहाँ से आ रहे, कहाँ से गुजर रहे हैं। being Muslims and human beings. मैंने हमेशा उनको देखिए, मैं Allah has created us and Allah has blessed us with मैं this. टोक कर कहता हूँ, देखिए रिजिक देने वाला अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है, हमें कोई रिजिक नहीं देता, बट काम क्या कर रहे हैं वो, जो मैं हमेशा जो भी बात कहता हूँ तो मैं और ये हमेशा टोक कर ही कहता हूँ, वो कहाँ है, उन्हें ये काम करना था, वो तो अंदर बैठे हैं, वो गर्मी और अपने आप को गर्म करें, अंदर बैठे हुए गर्म करें, हम तो मैदान के अंदर इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए, हम दर्शकों को संभालेंगे, अपने सिस्टम को संभालेंगे, अपने आप को संभालेंगे। चलिए यहाँ पे एक और चौका, इस चौके की मदद से 4 रन और या जस्ट बुखारा मागाम का चौका, चौका मैदान के अंदर जो बैट्समैन बैटिंग कर, एक तरफ शाहिद, इस बार हस्ताक्षर बल्ले से किया, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। Well, with that 6, that maximum of the bat of John Muhammad, half a dozen, I think Mansoor, you should go this way because it's coming from this end. We need to protect camera setup here. Those drops may disturb our system. 101 minute. They need 94 from 30. Thank you very much, Mudassir Mallah, for your assisting feedback and your opinion. You're absolutely right. I'm going to take your words. Was that a no ball, Mansoor? But the score ticker isn't showing anything. It is simply displaying that they need 94 of 30. That is the equation for Kashmir Knights. Knights need 94 from 30. Top one in the air. There is a man. Will he get to the ball? Oh, he gets to the ball. Age is just a number as he gets to the ball. Thank you very much. Thanks a lot, buddy. He is from get there on Chichlura Hills. Messiah's get. Abdul Qayyum writes in, you have been doing commendable. Thanks very much. Thank you. Thanks a lot, brother. I take your opinion in a positive manner. Don't worry. It was just my own opinion. It was what I point out in my own opinion. I was just trying to tell you that it's better to wrap it up because outfield is where safety matters the most. And if anybody pulls a muscle cramp or somebody slipped on the field, he need a lot of care later on. He need to recover. It will take a lot of money, and at the end of the day, health and safety is important for all of us. And in the meantime, it's 182. Is it more than that? It's 182 for the loss of 6. Amir Mallah comes in at number 8. Kashmir Knights have good depth in the batting, but it isn't going to be easy now. They are 94 runs away from remaining 28 balls. And people writing in their opinion, their comments, their words. And thanks for their assisting feedback, positive feedback. At least they're not throwing cold water on. It's heavy drizzle on again. Iran picks up more. Next one, high on, high above the knee roll. Not given as LBW. He survives. It's 183. They're still 93 runs behind. It's Murad's game to lose. Isn't Mansoor? It's Murad's game to lose. Just 3 or 4 wickets away. The par score, if Mansoor can go through, we will find it out. That's gone. That is a biggie. It's out of here. Dismiss you from John Muhammad. 87 needed from 28 balls. Well, in the meantime, it's down to 26 balls and 87 needed. Tough job. The asking rate climbs to 20.06 an over. 20 an over. Tough job. 14-15 an over. I think that is possible to some extent. He lost his run up. He's going back to the top of his bowling mark. He need to reload and re-bowl that one. This is over number 16 we are in. The organizing committee is in here. I think and the match referee should come in now, intervene. Oh, what was that? And what's going on? What's going on? This is unfortunate. This is unfortunate. What's going on? He chases the ball.
He chased that one. What is this? Is it a no ball? Is it a no? Bell is smiling. What's going on? A funny moment on the field as he chased that one. Well, how they take it and how beloved listeners will react now, I don't know, but he chased that one and everyone is smiling as he gone after that one. It's a no ball signal by umpire. That's going to be a no ball. Fruit coming up. They are 82 runs behind. Of 26 ballers, Bell is smiling. He's down on the field. He can't believe that. He is. Look at Samir Bell. He can't control his nerves at the moment. He can't control his that adrenaline flow at the moment. He lost his cool. John Mohammed is at that one. Going down to the point area. The next one, it was a no ball. It was a free hit and is beaten on that occasion. Gabbar Rashid is going back to the top of his ball. John says, go on. Oh, there is a kind of drama in the middle. Utter drama. He says, it's none of your job. Just go on to bowl the next one. Get back to the top of your bowling mark. And it is 194 for 6. Oh no, is it? It's 194 for 6. They are 82 runs behind. Own way of playing in and thinking. Here is the next one. Is he ready to face the next one? What's going on? John Mohammed is getting ready. John Mohammed is going to face the next one from Gabbar Rashid. He was eyeing that Yorker, but John Mohammed comes forward and keeps that one outside, out towards mid of it, not for runs. There is something going on between Gabbar Rashid and John Mohammed. Commits past on. A kind of a drama in the middle. To me it was a bizarre kind of a drama to me. This isn't good at all. Sledging goes on sometimes. We have seen that on the field, and one of the terrific pacers in the valley, that is Said Sagar, who is known for sledge, but sometimes it just up the tempo of the opponent. Have you seen that 2007 inaugural T20 World Cup edition in which Andrew Fluntop got engaged with Yugraj Singh and having some words, and later on Yugraj going off to Broad and sent him all around the park. 6 sixes in an over. Sometimes it does take that attention away. It does distract your mind. That's a big strike, but there is a man waiting for the ball. He's taken it long on. Wicket number 7 down. He goes big. Finest man in place. It's 17 minutes past 5. I think my train is gone. So there's no possibility at the moment. Then a 7 down. 194 or more than that. Let me find it out. Come this way. The 199 for 7. 77 away, 24 balls remaining. अभी लंबा सफ़र तय करना बाकी है, टीम को मुश्किल है क्योंकि यहाँ विकेट्स लगातार टीम गंवा रही है. ऊपर से 24 गेंदे 77 रन बनाने जीत के लिए. तो अगर आस्किंग रेट की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 20-20 की और 19 की औसत से यहाँ टीम को रन बनाने तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ अब हर ओवर में 3-3 बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे. हालांकि कहने का मकसद ये है कि 3-3 छक्के लगाकर और यहाँ तब जाकर टीम को जीत मिल से. ऊपर से 6 आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस गई है. 199 यानी कि एक कम 200 बोर्ड पे इस वक्त नज़र आ रहा है. तो अभी भी आमिर मल्ला चलेगी. देखना होगा क्या जलील का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि अब वो जो मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर है वो तो चलेगी. अब टेलेंडर्स का आना जाना है कि लगा रहेगा क्योंकि अब टेलेंडर्स में से सबसे पहले जलील की बारी और जलील आया डगआउट से जॉन मोहम्मद का साथ देने के लिए. कप्तान अब एक बार फिर दोबारा गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर में पहली मरतबा टाइम नहीं कर पाए. लॉन्ग ऑन की तरफ दादा तैनात जिन्होंने इससे पहले आमिर मल्ला का कैच लिया, अपना छोड़ बदला. जॉन मोहम्मद स्ट्राइक पे और आमिर मल्ला की यहाँ जलील ने जाकर अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ. Jalil underway, 200 on the board. Kashmir Knights still 76 behind. Jalil opened his account. 22 balls, 76 needed. John Mohammed is taken. Wicket number 7 down. He's gone.
He's walking up the field, gone on 22 of 9 balls. He chases the ball and he is taken in the end. He's on his way back to pavilion. 7th one bites the dust. 7 wickets down, 76 behind. Sat. And in Kashmiri we call it Satan Bajan Pet Banayumo. Zatran. Janab. 76 needed of 22 balls. Slipping away. Kashmir Knights 76 behind. The way Imtiaz lefty batted, took that responsibility, shouldered that innings, anchored that innings, scored 114 around that. Equally supported by Irfan Lara, who batted for 83, 85. And it's where game changed completely. And within the power play, they changed the batting order, promoted Mudassar alongside Hyder. It was better to go with Gabbar and Mudassar. Hyder should have come at 3. He should have been demoted a little bit. It was better to send him at number 3, but he came at number 1. And it's where they failed it. Within the power play, they were unable to score at the rate of 15 and over. They need 90 or 100 around that after 6. They reached 100 mark around 8 or 9th over. In 9th over, Kashmir Knights reaching 100 and 276. It was always going to be a tough one, and I was talking about that earlier on during that innings break. It is 20-25 more and enough on the board, but who would have thought that it is it's going to be a long way for Kashmir Knights. Where they're going to finish it up, we shall come to know that what was the best score for Kashmir Knights for 20 overs. It's 75 needed of 21. I thought 250 would have been a good score, ideal one. 75-20. That is a dot delivery. Pitched inside the line, then moving outwards down to 90 now. They are 75 runs behind. Will he be caught? He is taken in the end. Wicket number 9 down. It's down to remaining 8 balls. Kashmir Knights on a verge of making an exit, and it's almost all over for Kashmir Knights, and that's it. And who's going to come in at number 11? We'll have to wait and watch. Is someone going to come in at 11, or it is all over? Let's find it out. Is someone going to come in at number 11? Someone is padded up. He's waiting for his turn. He's going to come in at number 11. It's going to be Kaptan Shaukat is going to walk in at number 11. It's almost all over. With the train timing, it was around 5:20. It's 5:22. You may call Nazir Sab and find out what is the train timing, and he may trace it at the moment. Call him. He knows. It's 201 for 8. 9. So sorry, correction comes in. They're 9 down. Our score ticker isn't working properly, so I threw it out accidentally. 8 down. They're 9 down. Just a wicket away from winning this one. Captain comes in at number 11. What is going to do now? They're 75 away. They need a miracle, and it's almost all over. 75 from 18. Here is Dada. Deep in crease, Jai Thrug find a man on edge of the circle around that gully area, not for runs. 75 from 17.
Kashmir Knights. We were talking, and it looks like that it was better to set 220, 230 for Kashmir Knights. 270 proved to be enough. Not just above par, but it is something that is beyond imagination. Kashmir Knights 75 needed of 18 balls. Sunday is going to be the Super Sunday. That is going to be the final day of Magab Knockout Cricket Tournament. Direct hit. How is that? Is going on? It ricocheted down toward his fence. Is it a boundary? Yes, he's home. So 4 runs gifted, or 5 runs gifted on that occasion. This isn't good from field. Need less shy, and it parried away off the stumps into the fence. Now there, how many runs behind score is yet to update. It's taking little time to update. Now it's displaying that kind of an error. We're facing the technical glitch again. Flight and off. Jaitrak doesn't connect that big shot. Imtiaz lefty was expecting high flying ball, but he can't make that one fly. They are 68 behind. 11 balls are gonna come. Here is lefty again. Chokka does well, digs it up nicely. Could be tight again. Could be tight again. Oh, look at that. Dangerous move from Gabbar Rashid again. And Imtiaz lefty just trying to get out of that one. And in that process, it was a top call from Imtiaz lefty. Wasn't that far from his body and head. Good shot straight down the ground. That's gone on the full for 6. With that 6, they are 62 runs behind. That 6 brought to you by Just Bukhara. 217 for 9. Here is Imtiaz again. Flight on offer. Skips down the track. Unable to get hold of that. Doesn't get hold. Down to 58, I think. 58 needed from 7 balls. They're 218 for 9. Exposed at all the stumps and is taken at short fine. That's it. Kashmir Knights rapid on 218. And it means Murad prevailed by 57 in the end. And Muraad Cricket Club is going to be the second finalist team of Magab Knockout Cricket Tournament Season 4. We'll take you back to the studios of JK Sports Time. We'll be back on Sunday with that all important final match. Till then, take care, viewers. Assalamu alaikum wa rahmatullah.